Welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the 20th part of Barron's 800 words with easy to remember images series. And we'll cover 20 more words in this video. And so if you want to cover the rest of the videos, so kindly visit the channel and watch the entire playlist available there. So with that, moving towards the session. So 381st word that we have is igneous, which means produced by fire or volcanic. So you can remember this word with the help of this image. जहाँ पे हीरो का एक बाइक था which was named as Igniter. So हीरो ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि इसकी जो स्पीड है इज प्रोड्यूस्ड बाय फायर, ये काफी फास्ट चलता है. So with that you can remember. And also if you break this word, तो यहाँ पे आग जैसा वर्ड भी साउंड करेगा. So with that also you can remember. Moving to the next word. Next word that we have is imbroglio, which means complicated situation or entanglement. So you can refer to this image, which is complicated enough to understand. And you can just connect this word with this image, जहाँ पे आप इसको ब्रेक करके भी याद रख सकते हो कि he is saying that I am her bro. So I am bro. So he is saying that I am her bro and kind of that stuff. So with that, you can remember this word. Moving to the next word. Next word is immutable, which means unchangeable. So आप इसको mute से भी याद रख सकते हो. So this is changing from unmute to mute. So अगर कोई immutable है so वो change नहीं हो सकता. And also during COVID आपने एक word सुना होगा कि एक नया variant आया है, एक नया mutation आया है कोरोना वायरस का. So एक नया change आया है कोरोना वायरस में. So with mutation you can also remember कि mutation means change, immutation means unchange. Moving to the next word. Next word is impair, which means to damage or injure. So again it is opposite word of pair. Pair means कि कुछ चीजें जोड़े में है and impair means वो टूट चुके हैं, they are damaged. So just consider it as opposite of pair, then it is very easy word to remember. Moving to the next word. Next word is impassive, which means showing no emotion. So you can play around this word to understand it very easily. So I am pass. So जब मैं पास होता हूँ, so it is not very good thing. मैं यहाँ पे ना खुश हो सकता हूँ ना रो सकता हूँ, because मैं फेल नहीं हुआ और मैं डिस्टिंक्शन नहीं लाया. So I am just pass. So I don't have any emotion to express. So with that you can remember. Moving to the next word. Next word is impecunious, which means poor or having no money. So इसको भी आप ब्रेक करके याद रख सकते हो. Wherein I am means I, पैसु that means पैसा or money, and with this ni you can consider it as ni, नहीं. So I don't have पैसा, I don't have money. पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है मेरे पास. So with that you can remember. Moving to the next word. Next word is impede, which means to hinder or block. And again you can break this word. I am paid. So paid जो है, जो tree है, वो अगर ऐसे बीच में रख दे, so it is hindering or blocking your road. So इससे आप याद रख सकते हो कि मेरे रास्ते के बीच में अगर पेड़ आ गया, so it is blocking my way. Moving to the next word. Next word is impermeable, which means impossible to permit. एंड इसको आप इजीली परमीट से याद रख सकते हो क्योंकि सो ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है परमीबल और परमीट का. सो परमीट मतलब आपको अलाउ करना. सो एयर इज नॉट अलाउड थ्रू दिस. सो दिस इज impermeable because air is not allowed inside. So impossible to permit. So permit ही नहीं मिल रहा है. So how can you enter? Moving to the next word. Next word is imperturbable, which means not easily disturbed. So again you can break this word and with the help of Swami Vivekanand you can remember this word. So again I means मैं. So मुझ पर, per, मुझ पर, मेरे ऊपर, turban. So just consider this turbable as turban. So मुझ पर turban है. So मैं स्वामी विवेकानंद हूँ and अब मैं easily disturb नहीं हो सकता. So imperturbable. So turbable को just आप turban consider करो and turban is this. So अगर मेरे पे turban है, so I am acting as a Swami Vivekanand and I will not easily get disturbed. Moving to the next word. Next word is impervious, which is incapable of being affected or impossible to penetrate. And just consider this pervy word as pervert.
सो अगर आप परवर्ट नहीं हो, सो यू आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड. आप किसी भी चीज से, किसी भी इमेज से अफेक्ट नहीं हो सकते. You will be concentrated enough. So you can read this pervious as pervert and you are negating it through im. So you can easily remember this word. Moving to the next word. Next word is impinge, which means to strike or to have a noticeable effect on something, especially a bad one. So just consider कि अगर सर पे कुछ पिन जैसा हो गया है, so it will leave a noticeable impact. And with this pin word, you can easily connect with the image. Moving to the next word. Next word is implacable, which means inflexible or incapable of being pleased or calmed down. So just ये place से आप याद रखो कि आप एक place से दूसरे place move नहीं कर पा रहे हो. So with the help of this place word, you can easily relate to the flexibility. Moving to the next word. Next word is implausible, which means unlikely or unbelievable. So plause is a positive word, which means you have achieved something very big. So जो भी चीज आपको plause नहीं कर सकती, it is very unlikely to believe. So this im word is making this plause negative, and which is making it very unlikely or unbelievable. So with this, moving to the next word. Next word is implicit, which means implied or understood but not stated. So एक word होता है explicit, जहाँ पे you are expressing everything, आप सब कुछ बोल रहे हो so that other person understand it. फिर ये word होता है implicit, जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं रहे but still वो understand कर रहा है. So आप implicit और explicit दोनों साथ में याद रखो so that you can cover two words together. Moving to the next word. Next word is implode, which means collapse inward violently. So एक word होता है explode. So explode is outward and implode is inward. And दोनों collapse कर रहे हैं, violence कर रहे हैं. But the thing is, implode is towards inward and explode is towards outward. So with that, you can remember two words again. Moving to the next word. Next word is imprecation, which means curse or damnation. So again, आपको थोड़ा सा वर्ड प्ले करना होगा एंड जस्ट ये सी को एज ए टी पढ़ना पड़ेगा. एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, सो आप इसको प्रेतेशन पढ़ोगे. सो प्रेत से आप भूत एंड ऑल दो स्टफ कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन आप उनको कर्स से कनेक्ट कर सकते हो. सो जस्ट कंसिडर दिस सी एस टी एंड इम्प्रेतेशन पढ़ो इसको, देन ये प्रेत हो जाएगा एंड प्रेत भूत इज काइंड ऑफ दैट स्टफ, एंड देन यू कैन इजिली कनेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word is impute, which means to attribute the fault to or relate to a particular cause or source. So egg के example से आप पढ़ सकते हो कि egg को अगर आपने water में put किया, so ये ऐसा हो जाएगा. So the next day your mom is asking कि egg को पानी में किसने put किया? So you are telling I put this egg. So I put and E for egg. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर कि आपने एग के ऐसे होने का कॉज स्टार्ट किया था बिकॉज आपने एग को पानी में रखा था. सो आपने ये पर्टिकुलर कॉज स्टार्ट किया है. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज इनएडवर्टेंटली, व्हिच मींस केयरलेसली और अनइंटेंशनली. सो एक वर्ड होता है एडवर्टाइजमेंट, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस वर्ड, सो ये काफी एडवर्टाइज से सिमिलर वर्ड है. सो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो काफी प्लान्ड होता है. उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, जो एक्टर होते हैं, वो काफी केयरफुली प्लान किए जाते हैं, एंड विद दैट वो एक एडवर्टाइजमेंट बना के आपको सर्व करते हैं. वेरिन अगर आप उसके आगे इन लगा रहे हो, सो यू आर मेकिंग दैट एडवर्टाइजमेंट नेगेटिव, यू आर मेकिंग इट केयरलेस. सो विद एडवर्टाइजमेंट you can connect and you can remember this word. Moving ahead. So next word is incarnate, which means having bodily form. So just आप ये image को imagine कर लो, and this image is in car. So car is very bodily, and car में भी there is a body. So with that you can remember having a bodily form. Moving to the next word. Next word is inchord, which means imperfectly formed or formulated. So अगर आप इस word को थोड़ा observe करो, so यहाँ पे चाव जैसा एक word है. So you can connect it with this बेला चाव, and बेला चाव means money heist. So money heist में जो भी चीजें हुई थी वो बेस्ड थी एक परफेक्ट प्लान पे जो कि अच्छे से फॉर्मुलेट किया गया था.
एंड अगर उसके आगे इन लग रहा है, सो इट इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर formulation negative, so imperfectly formed or formulated. So with this you can connect and easily remember this word. Moving ahead, so with that we have completed the 20th part of balance 800 words with easy to remember images series. So now we are halfway around, so kindly visit to the channel ताकि आप पूरे वीडियोस को वन बाय वन कवर कर सको एंड यू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द वोकैबुलरी सेक्शन. सो बैलेंस के 800 वर्ड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो काइंडली इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम by seeing the video or taking the screenshot, but just be careful. And if you are learning well from the videos, so kindly like, share and subscribe and stay tuned to the channel and keep learning.